Let's see why oxytocin is the drug of choice for induction of labor. Oxytocin is the drug of choice for induction of labor. It is administered by IV infusion. The starting dose should be low. Rate of infusion is monitored and adjusted according to the response, and the rate of infusion is monitored and adjusted according to the response. During oxytocin infusion, uterine contraction, maternal blood pressure, fetal and maternal heart rate should be monitored. Okay. So oxytocin is the drug of choice for induction of labor. Route of administration, IV infusion. The starting dose should be low and the rate of infusion is monitored and adjusted according to the response. And while oxytocin is being infused, uterine contraction, maternal blood pressure, maternal heart rate and fetal heart rate should be monitored. ठीक है, ऑक्सीटोसिन के आईवी इन्फ्यूज़न के टाइम क्या क्या मॉनिटर करना है? फीटल हार्ट रेट, maternal heart rate, maternal blood pressure and uterine contraction. Let's see, why is oxytocin preferred for induction of labor? The dose or rate of infusion can be adjusted according to the response. So the dose or rate of infusion can be adjusted according to the response. The dose or rate of infusion can be adjusted. It has a short plasma half-life. Its action can be terminated by stopping the infusion. अगर इसके action को ख़त्म करना है तो फिर stop the infusion. If there are signs of uterine hyperstimulation या fetal distress, then its action can be terminated immediately. ठीक है. Oxytocin, it has a short half-life. Okay, its action can be terminated by stopping the infusion immediately. The action of oxytocin can be terminated by stopping the infusion immediately if there are signs of uterine hyperstimulation or fetal distress. ठीक है, अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है जैसे कि यूटेराइन हाइपरस्टिमुलेशन या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, then oxytocin can be stopped immediately. At low doses, there is a period of complete relaxation between the uterine contraction. This helps to maintain blood flow to the placenta and fetus, thereby preventing fetal asphyxia. At low doses पे there is a period of complete relaxation between the uterine contractions. At low doses, there is a period of complete relaxation between the uterine contraction. Okay, तो इस complete relaxation के कारण it helps to maintain the blood flow to placenta and fetus and thus preventing fetal asphyxia. Low dose पे there is a period of complete relaxation between the contraction. Okay, at low doses, there is a period of complete relaxation between the uterine contraction. This helps to maintain the blood flow to the placenta and fetus and thus prevent fetal asphyxia. It does not interfere with fetal descent and it does not contract the lower segment. Oxytocin lower segment को contract नहीं करता and thus does not interfere with the fetal descent. तो 4 रीजंस हैं कि ऑक्सीटोसिन को क्यों प्रेफर करते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. पहला, इसका जो डोज है या जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स. दूसरा, इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, तो अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है जैसे कि यूटेराइन हाइपरस्टिमुलेशन या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो वी कैन टर्मिनेट इट्स एक्शन इमीडिएटली बाय स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन. फिर लो डोजेस पे देयर इज़ अ पीरियड ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, और इस कंप्लीट रिलैक्सेशन के कारण द ब्लड फ्लो इज़ मेंटेन्ड टू द फीटस एंड प्लासेंटा. दिस प्रिवेंट्स फीटल एक्सफाइजिया. सो फीटल एक्सफाइजिया भी प्रिवेंट हो रहा है यहाँ पे बिकॉज द ब्लड फ्लो इज़ मेंटेन्ड. चौथा रीज़न
कि ये फीटल डिसेंट के साथ इंटरफेयर नहीं करता बिकॉज इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट द लोअर सेगमेंट. Oxytocin does not contract the lower segment and does not interfere with the fetal descent.